Every note has a story, every song a heartbeat. Music is not just heard, it is felt. It is the song of the earth, the whisper of the winds. It has no boundaries and comes straight from the soul. Every rhythm paints an emotion on the canvas of our hearts. Hope this soul-stirring performance by our dip sides make these observations come to reality and led you to the glorious domain of Vasundhara. Truly, it has been said that music expresses all that words cannot. At this point of time, it is a privilege to request our Honorable Chief Guest to address us all and bless us for success in our endeavors. Sir, please, and may I request our Principal, sir, to please accompany our Honorable Chief Guest. सभी को नमस्कार. प्रिंसिपल DPS श्री वशिष्ठ, चेयरमैन ACS and ADHR श्री पवन कुमार, EDA Phande, श्री प्रवीण निगम, members of ACS Managing Committee, distinguished guests, parents, teachers, and my dear students. The future of our nation. I am extremely happy to be present here on your 41st Foundation Day celebration. In fact, the glorious past of DPS Bhilai, believe me, it was hard even among all the sister units of SEL. And it's heartening to know that students of this school have secured 99% in class 10, 98% in class 12, 9 or 80 students have cleared JEE Main, 19 students have cleared JEE Advanced, and more than 40 probably cleared in NEET. It's marvelous performance, and I congratulate the excellent performers, the teachers of this school and the administration of DPS Bhilai. In fact, students of this school are present all over the world. But we should not be complacent as the challenges are ever increasing, and every day you will face new challenges once you go out of this school and face the real world. My sincere advice to you: study hard. It's your perseverance, it's your hard work, and it's your preparedness for the future that will make you a successful individual. My request to the teachers, let us prepare our students. In fact, even parents, let us prepare our students to face the challenges of this world. It's not only the information and the knowledge we gather from the school. It's the way we utilize it that will make us successful. And I am sure the hard work and perseverance of you and the guidance of the teachers will make you success in this world. My best wishes to DPS Bhilai and my best wishes to the students. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your kind words and your words of appreciation and advice. I am sure they touched a chord within each one of us, and we shall be benefited immensely by your kind words. Thank you, sir, once again. Vibrant plumage grace,
the earth like rainbows set in place. Dancing in rhythm with monsoon skies, their beauty is a feast for yearning eyes. Among the many jewels of Vasundhara stands the peacock, the national bird of India, a living poem of majesty and elegance. They are believed to herald the arrival of the monsoon season with their elaborate dances and calls, often seen as a prelude to rainfall. In Indian philosophy, the peacock is often associated with spiritual awakening, purity, and joy. In mythology, it is the mount of Kartikeya, the god of war, and closely associated with Saraswati, the goddess of wisdom. This divine bird is created from the feather of Garuda, the mythical bird. However, its most significant association is with Sri Krishna. But beyond myth and metaphor, the peacock is a mirror of Earth's monsoon rhythm, opening its plumes to rejoice in the song of rain clouds. In the hush of the monsoon breeze, when the earth wears the scent of rain, the peacock takes the center stage. With feathers unfurled like a fan of jewels, it pirouettes in delight, celebrating the rhythm of rain. The peacock doesn't just dance, it tells a tale of joy, of longing, and of nature's timeless beauty. Let us now witness the rhythm of rain, the spirit of celebration, and the heartbeat of Vasundhara, the majestic monsoon. A beautiful presentation by the Middle Wing students.
What an amazingly graceful pattern of movements. Hope this troop of peacocks brought the magic of monsoon close to all of you and drenched you in their creativity and nuances. This dance did not just capture the vibrant beauty of peacock, but also its connection with the sprinkle of monsoon and the soul of Vasundhara, a confluence of life, color and beauty, and an endless treasure of wonders. But each treasure needs their protector, a divine force that ensures the cosmic balance. And that force is none other than Lord Shiva, the Mahadev, the eternal guardian of nature. शिवम शाश्वतम, द इटर्नल शिवा, यह है हमारी अगली प्रस्तुति। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सृजन करता वही, विनाशक वही, पालनहार वही, सृष्टि का आधार वही, ज्योति करुणा क्रोध का संगम, संयम भक्ति साहस का समन्वय, मस्तक पर चंद्र, जटाओं में गंगा, अधरों पर स्मित, गले में सर्प। भोलेनाथ की इस छवि का स्मरण करते हुए विचरण करते हैं एक ऐसे लोक का जहाँ शिव है, शक्ति है, पार्वती है, नटराज है। एक ओर गंगा का उद्गमन है तो दूसरी ओर समुद्र मंथन है जहाँ महादेव की दिव्य ऊर्जा है। एक अलौकिक लोक जहाँ हर कण में महादेव का जय घोष है और भोलेनाथ की भक्ति का अमृत है। ओम नमः शिवाय। जो सृष्टि की रक्षा के लिए विष का पान कर ले वो है शिव। जो सती के वियोग में सारा संसार त्याग दे वो है शिव। जो तांडव से संहार करे और मौन से सृजन, जो त्रिनेत्र खोलते ही अहंकार को भस्म कर दे वो है शिव। जो प्रेम को तप से ऊंचा मानकर पार्वती को अर्धनारीश्वर बना दे वो है शिव। जो स्वयं को अर्पित कर दे जगत के कल्याण हेतु वही है शिव।
शब्दों में शांति और हृदय में शिव। स्वामी, पिता ने यज्ञ रखा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। वर्षों से अपने मायके नहीं गई, क्या मैं जा सकती हूँ? सती, मैं देख सकता हूँ उस यज्ञ में सत्कार नहीं, केवल अपमान छुपा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां मत जाओ। मेरा अपमान कैसे हो सकता है उस घर में? मैं पुत्री हूँ उस कुल की। आप चलिए मेरे साथ, आपका भी तो सम्मान है वहां। जहां अहंकार विराजता है वहां ना श्रद्धा होती है ना स्वागत। किंतु यदि तुम्हारा मन अब भी अड़ा है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जो शवों के बीच समाधि लगाए वो मेरे यज्ञ में स्थान न पाए। न रत्नों का मोह, न सिंहासन का भाव। कैसा है ये देव, कैसा है ये स्वभाव। सर्पों का हार बनाकर घूमे, भूत पिशाच संग नृत्य में झूमे। न वंश, न कुल, न शिष्टाचार। कैसे मालू से देवों का अधिपति अपार। वो ना राजसी है, ना साधु समान, ना वेद माने, ना जाने प्रमाण।
जो स्वयं को महादेव कहे जग में, मैं शीश न झुकाऊं ऐसे विरक्त राग। दक्ष, तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मैं आदि शक्ति हूँ, विष्णु के चक्र की गति, महादेव के त्रिशूल की ज्वाला और ब्रह्मा की सृष्टि की प्रथम प्रेरणा हूँ। मैं आधार हूँ इस ब्रह्मांड की, ना कोई माया ना स्वप्न। अब देख मेरा रूप, मैं ही शक्ति, मैं ही क्रोध, मैं ही आदि, मैं ही अनंत। अपने शिव के लिए वो असहनीय था। मैं सती हूँ, पर आत्मा में शक्ति का स्वरूप। शिव मेरी आत्मा है और मैं उनका अस्तित्व। जहाँ शिव का अपमान हो, वहाँ सती का रहना पाप है। अतः आज मैं इस देह को त्यागती हूँ। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा प्रजापति दक्ष, और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को भुगतना पड़ेगा अब इस दुष्कर्म का परिणाम। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करना। सती चली गई और साथ ही चला गया शिव का संकल्प, शिव का मौन। जब प्रेम का तिरस्कार हुआ, तब जटाओं से जन्मा प्रतिशोध। वीरभद्र, जिन्होंने किया दक्ष यज्ञ का विध्वंस और दक्ष के अहंकार का अंत।
यज्ञ की राख अभी भी जल रही थी, पर शिव अब उनके लिए कुछ शेष न था। संसार से विमुख हुए शमशान की शांति में लीन हुए और वहीं जन्मा उनका अघोर रूप, बंधनों से परे, बोध से परे। शून्य से निकली फिर एक किरण। 108 जन्मों के तप के बाद वही शक्ति पार्वती के रूप में धरती पर उतरी। एक नई आशा जगी, सृजन की, प्रेम की, शिव की पूर्णता की। जब अमृत के लिए हुआ समुद्र मंथन तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। ना देवता पी सके, ना दैत्य सह सके। भय से काफी सृष्टि, चारों ओर छा गया विनाश का संकट। तब स्मरण हुआ उस एक का जो है संहार और करुणा का स्वरूप, जिन्हें देव भी नमन करें और दानव भी। वही हैं त्रिलोक के अधिपति, देवों के देव महादेव।
महादेव ने बढ़ाया अपना हाथ और बिना क्षण भर की देरी पिया वो विष, थाम लिया सृष्टि का अंत अपने कंठ में। तभी से कहलाए वो नीलकंठ महादेव। जो सृष्टि की रक्षा में विष पी गए, जो अधर्म के अंत में तांडव कर गए, जिन्होंने हर युग में त्याग का आदर्श रचा। जब उन्होंने पार्वती से विवाह किया तो फिर से शिव और शक्ति एक हुए और सृष्टि को मिला संतुलन, मिला नया जीवन। शिव और शक्ति के मिलन के साथ ही सृष्टि ने फिर एक नई ऊर्जा पाई। अब समय था पवित्र गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का। दिव्य गंगा स्वर्ग से उतरी एक पवित्र धारा।
धरती को छूने का विचार किया तो उनके तेज को संभालने के लिए महादेव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। शिव ने धरा का कल्याण किया। पर जब सृष्टि में नृत्य अहंकार का प्रतीक बनने लगा तब महादेव ने लिया नटराज का रूप। नटराज के तांडव के बाद सृष्टि में फिर छा गया सन्नाटा, पर असुर रक्त बीज ने त्रिलोक में हाहाकार मचा रखा था। प्रभु, त्रिलोक में रक्त बीज का आतंक निरंतर बढ़ रहा है। हर बूंद से एक नया विनाश जन्म लेता है। मुझे ज्ञात है कि रक्त बीज का अंत मेरे ही हाथों संभव है, पर यह कैसे होगा महादेव? गौरी, तुम स्वयं शक्ति हो। तुम केवल जननी ही नहीं, तुम वह हो जो सृष्टि के संतुलन के लिए काल बन सकती हो। जिस दिन तुम अपने भीतर की महाकाली को पहचान लोगी, उस दिन किसी राक्षस की ताकत तुम्हें डिगा नहीं पाएगी।
आरंभ में कोई में ज्वाला बनकर महाकाली विकराल रूप में तांडव कर रही थी, तब स्वयं महाकाल प्रकट हुई, उन्हें शांत कर दी।
जिसने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिव की महिमा अनंत है, उनका स्मरण ही जीवन को शक्ति व शांति देता है। हर हर महादेव। Education and culture are inextricably linked. Culture shapes a society's educational aims and methods, while education in turn shapes and transmits culture. Shiv Stutis, a part of the cultural fabric of Hinduism, are believed to bring about spiritual and mental well-being. With this breathtaking demonstration of the might and mercy of Lord Shiva, we come to the close of this program. At this juncture, let us take a moment to honor Vasundhara, the Mother Earth, and specifically DPS Bhilai, our treasure trove. A temple of knowledge, a guiding flame, writing on earth an eternal name. With hands that nurture and minds that fly, DPS Bhilai keeps its spirit high. Fulfilling aspirations of children, helping them soar high, enabling them to be the pride of DPS Bhilai. Guardians of green with hearts so true, we shape the earth, we dream, we do. Vasundhara, true to her name, she has given generously, not just in effort, but in spirit. With quiet strength and unwavering grace, she has nurtured, guided and uplifted all around her. Her presence has been a gift, her contributions deeply felt. To Vasundhara, we offer our heartfelt gratitude for being not just part of the journey, but the soul within it. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education, as said by Martin Luther King Jr. Respected Chief Guest, Shri Chittaranjan Mahapatra Sir, Director in Charge, Bhilai Steel Plant, Bhilai, esteemed dignitaries, Honorable Principal Sir, dedicated teachers, beloved parents, valued members of the press and media, energetic participants, and dear students. On this momentous occasion of our school foundation day, filled with pride and celebration, it is my profound privilege and immense joy to propose this vote of thanks. First and foremost, we are incredibly honored and deeply grateful to have among us our Chief Guest, Shri Chittaranjan Mahapatra Sir. Your esteemed presence has illuminated this celebration and added immense prestige to our event. Thank you, sir, for honoring us with your wisdom and sharing this special day. Our sincere gratitude extends to the guiding lights of our institution, Mr. Pravan Kumar, Chairman, SES Bhilai and ED HR BSP Bhilai, Mr. Praveen Nigam, ED FNA BSP Bhilai and Mrs. Chavi Nigam, Mr. Saprasi Sen Gupta, Member SMC DPS Bhilai and GM RSM BSP Bhilai and Mrs. Jayati Sen Gupta, Mrs. Shikha Dubey, Member of SMC DPS Bhilai and GM Education BSP Bhilai, Mr. Pramod Kumar, Member SES Bhilai and CGM Mechanical BSP Bhilai and Mrs. Preeti Singh, Mr. Harpreet Singh, Member SES Bhilai and GM Projects BSP Bhilai and Mrs. Manjeet Kaur. We are thankful for your constant guidance, support and commitment to the excellence of our school. We are also highly grateful to Madam Renu Vasist for her invaluable support
and behind the scenes contributions. Your encouragement and involvement are truly appreciated. To the captain of our ship, our principal, Shri Prashant Vasisht, we extend our deepest gratitude. Sir, your unwavering dedication, inspiring leadership and relentless efforts form the foundation of these successful celebrations. We sincerely appreciate your guidance and leadership. Matthew Jacobson rightly said, behind every young child who believes in themselves is a parent who believes first. We thank the PTA members for their vital partnership and unwavering support for nurturing our school community. Members of the press and media, thank you for joining us today and sharing the spirit of our Foundation Day with a wider audience. We are grateful for your presence. Our enthusiastic parents, participants whose talents and energy brought this day to life, well done. The esteemed parents, for entrusting us with your children and for your constant encouragement and faith in our institution. Our dedicated teachers are the heart and the soul of our school. Your hard work, passion and commitment to shaping young minds, especially in preparing for and executing today's event, are truly commendable. Thank you for going above and beyond. Our technical team support are the unsung heroes behind scenes. Your expertise ensure everything runs smoothly. The sound, lights and visuals were top notch. Our administrative staff and support team, whose meticulous planning, tireless efforts and dedication to countless unseen tasks made this grand event possible. We acknowledge and appreciate your valuable contribution immensely. The success of today is a testament to the unwavering dedication and collaborative support spirit of every single individual associated with our school family. Each one of you has played an indispensable role. Once again, to our chief guest, dignitaries, Principal Sir, Madam Renu Vasisht, and every member of our wider school community, thank you for making this Foundation Day celebration a truly special occasion, not just an event. Your presence and contributions have made it a cherished memory. May our school continue to flourish and achieve greater heights. Wishing you all a wonderful good evening. Jai Hind. Thank you, sir. I now request